Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome to Unacademy. My name is Samrat Sir Mishra and you are watching Unacademy OPSC. पूर्व सेशन भली ए सेशन ने मध्य हमें किछि इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करिवा इकोनॉमिक्स समस्त जानि छथि कि इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ओपीएससी एग्जामिनेशन ओपीएससी एग्जाम रे आपण ओएस एग्जाम कोंतु ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम बा एएसओ एग्जाम फॉर बोथ द एग्जाम्स this is important. This topic plays very crucial role. So economics रो किछि important topic आमे पूर्व डिस्कस करि सारचंती and in today's session आमे गोटे important topic discuss करबा that is national income. आमे national income ऊपर discussion करबा आज. So you can subscribe to Unacademy Plus by using this referral code EGOS so that you will be getting 10% off upon your subscription amount. All other explanations and details has been given here in the description box. You can go through that. Description box रे आपण complete information पाई परिबे. Okay. So national आमे last time growth development income यहाँ पर discussion करि सारथिले and वर्तमान आमे discuss करिबा related to concepts related to national income. So basically national income कहले आमे कोन बुझंती जेमति per capita income आमे बाहर करि पारचंती बा मु कहली कि इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन जेमति हमें गोटे पर्टिकुलर लोकर इनकम कैलकुलेट करि पारुचंती इन द सेम वे वी कैन आल्सो कैलकुलेट इनकम फॉर द एंटायर नेशन और वी कैन कैलकुलेट इनकम फॉर द एंटायर कंट्री एंड दैट इज नोन एज नेशनल इनकम ताकू नेशनल इनकम बोली कहते. सो नेशनल इनकम रा कांसेप्ट बुझिया पई हेले आउ किछि एडिशनल कांसेप्ट हमको बुझिया पड़िबो जेमति कि इकोनॉमी रे मनी ट्रांजैक्शन केमति होय ये विषय हमको बुझिया पड़िबो. इन द इकोनॉमी देयर आर फोर इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूटर मींस चारिटा कंट्रीब्यूटर अछि जो माने एठी यूजफुल होंती बा जो माने एठी ट्रांजैक्शन करंती इन द इकोनॉमी. सो को फैक्टर एठी ट्रांजैक्शन करंती बा को एलिमेंट बा को एंटिटी ट्रांजैक्शन करंती देखिबा. द फर्स्ट इज द इंडिविजुअल और द हाउसहोल्ड बा इंडिविजुअल ऊपर ये डिस्कस करूची कि इट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट player in an economy. The next is the business firm or the investor. Third is the government and the fourth one is the foreign national. So easy calculation हवा पाई एक सहज रे बुझिया पाई ये concept को आमे केवल first and second individual बा household and business firm बा investor को नबा and third and fourth government and foreign national को वर्तमान include करिवानी. So now let's understand some concepts related to income and expenditure. Concepts related to income and expenditure. This is a very simple concept that you can understand. Let's say आमे मार्केट जाउछंती किछि जिंसो किनिबा पई एग्जांपल हिसाब बुझा so that it will be easy for you to understand कि आमे मार्केट किछि जिंसो किनिबा पई जाउछंती and from the market let's say कि we are buying potato 1 kg potato and for 1 kg potato the price is 30 rupees per kg. Now this 30 rupees is expenditure for us. The 30 rupees is expenditure for us and for the shopkeeper that 30 rupees is the income because the person sells potato and earns 30 rupees and we will buy potato and will give 30 rupees. So ei jagar jodi ame dekhiba ka bhitare income and expenditure bhitar gote relationship exist kuruchi. It means income of one person is equals to expenditure of another person. Income of one person is equals to expenditure of another person. अर्थात गोटे लोकर इनकम आमे एठी देखले जेमति देखिया कि आमे शॉपकीपर इनकम एठी केतला ना 30 रुपीस इनकम हला. सो दैट 30 रुपीस इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ अनदर पर्सन जे एठी पोटैटो परचेज करथिला 30 रुपीस. ठीक अछि बा आमे किछि सर्विस पाउछन आमे डॉक्टर पाखु जाउछन सर्विस पय medical service pay. Then doctor consultation fee is 500 rupees. That 500 rupees is expenditure for us and in the same way that 500 rupees will be income for the doctor. So it hame dekhile ki in the economy what happens janakar income is equals to a gote lokor ba alga entity ro expenditure.
ताले हम एटी देखिबा फर्स्ट इज द हाउसहोल्ड अब बिजनेस फार्म ये दुईटा को हम कंसीडर करिया पे डिसाइड करथिले एंड हाउसहोल्ड विल प्रोवाइड लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर land labor capital and entrepreneur these four things that is these four things are called the factor of production याको हम पूर्व पढ़ी सरचंदी तीन चारटा फैक्टर ऊपर कि याको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोली कहंती वर्तमान जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखुचंती बिजनेस फर्म को की प्रोवाइड करछि इट विल बी प्रोवाइडेड टू द बिजनेस फर्म बाय द हाउसहोल्ड याको हाउसहोल्ड प्रोवाइड करिवो एंड नेक्स्ट या बदल रे फॉर लैंड बिजनेस फर्म एटी हाउसहोल्ड को रेंट दबो लेबर पाइन दबो वेज कैपिटल पाइन इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर पाइन दबो प्रॉफिट तो हमें देखिले कि या भितरु लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर पाई रेंट वेज इंटरेस्ट और प्रॉफिट दोची बिजनेस फर्म काहाकू ना हाउसहोल्ड को ताले जो रेंट वेज इंटरेस्ट और प्रॉफिट व्हाट इज दिस इज इनकम कहा पाई इनकम दिस इज इनकम फॉर द हाउसहोल्ड एई वे रे इनकम जनरेट करूची एंड फॉर द बिजनेस फर्म पाई जदी हमें देखिबा देन फॉर द बिजनेस फर्म दिस इज द एक्सपेंडिचर ये बिजनेस फर्म पाई एटी एक्सपेंडिचर हिसाब रे काम करूची अर्थात हाउसहोल्ड रो इनकम इज इक्वल्स टू बिजनेस फर्म रो एक्सपेंडिचर ताले जदी थ्रू आउट इंडिया हमें टोटल जते हाउसहोल्ड अछि सब हाउसहोल्ड रो इनकम को कैलकुलेट करबा इट मींस इट एक्रूज ड्यू टू द लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एति पाई हाउसहोल्ड पाखु जते की टोटल इनकम आसुची आकु जदी हमें कैलकुलेट करबा देन डेफिनेटली विल फाइंड द नेशनल इनकम तक हमें को मेथड रे पाइले ना इनकम को कैलकुलेट करि पाइले दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इनकम मेथड अच्छा तो नेक्स्ट हम जदी एक्सपेंडिचर देखिबा बिजनेस फार्म रो एक्सपेंडिचर अर्थात इंडिया रे जत्ते बिजनेस फार्म अछंती जदी समस्त एक्सपेंडिचर को हमें फाइंड आउट करबा देन डेफिनेटली हमें पाइबा नेशनल इनकम अगेन and that to expenditure calculate kale that is why the method is called expenditure method तो एटी दीटा मेथड हमें देखले नेशनल इनकम को कैलकुलेट करिवार तो फर्स्ट इज द इनकम मेथड एंड अनदर वन इज द एक्सपेंडिचर मेथड एंड या पूर्वरु हमें पढी सारचंती कि इनकम विल बी इक्वल टू द एक्सपेंडिचर सो इनकम मेथड रे हमें जति कि टोटल जनरेट करचंत बाय कैलकुलेट करचंती नेशनल इनकम दैट विल बी इक्वल्स टू द नेशनल इनकम व्हिच इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड ये वाला फर्स्ट पार्ट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस ग्राफ ये फिगर रा सेकंड पार्ट को हम बुझिबा कि एटी हाउसहोल्ड एंड बिजनेस फार्म अच्छा हाउसहोल्ड विल कंज्यूम सर्टेन थिंग्स कंजप्शन करिवो माने को टाइप रो प्रोडक्शन को टाइप रो मटेरियल ये कंजप्शन करिवो डेली यूज प्रोडक्ट्स हमें कंज्यूम करिवा एंड फॉर दैट पर्पस डेली यूज प्रोडक्ट को हमें कंज्यूम करिया पई कोड कंजप्शन करिवो कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज रा हमें करिवा एंड कहा टू आनिवा दैट विल बी प्रोवाइडेड दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस फर्म एटी बिजनेस फर्म प्रोवाइड करिवो काहा को ना हाउसहोल्ड को एंड फॉर दैट पर्पस हाउसहोल्ड्स नीड्स टू पे समथिंग टू द बिजनेस फर्म हाउसहोल्ड को या पई एटी पेमेंट करिवा को पड़ियो काहा को पेमेंट करिवो हाउसहोल्ड ना बिजनेस फर्म को पेमेंट करिवो ये जो पेमेंट करूची ये पेमेंट कहा सहित एसोसिएटेड द फर्स्ट इज द प्राइस जो प्रोडक्ट किनुची से प्रोडक्ट रो प्राइस केते अछि प्लस केते क्वांटिटी रो प्रोडक्ट किनुची इनटू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एटा को जदी करबा ताले हाउसहोल्ड केते टंगा बिजनेस फर्म को दोची ताको हमें हिसाब करि परिबा तो एई वे रे जदी हम देखिबा टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री टोटल गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country in a particular time period देखो तो बेसिकली इट टाइम पीरियड कहले वन फाइनेंशियल ईयर हमें नियंती ये फाइनेंशियल ईयर केबे स्टार्ट हुए ना ये 1 अप्रैल रु स्टार्ट है 31 मार्च पर्यंत चले याको हमें गोटे फाइनेंशियल ईयर बोली कहंती तो मु कहबी कि फाइनेंशियल ईयर को केमते लिखा जाए इट इज डिनोटेड एज लेट्स से कि 2019-20 फाइनेंशियल ईयर याको हमें एमते लिखबा 2019-20 फाइनेंशियल ईयर यार मीनिंग होची कि ये 1 अप्रैल 2019 नु स्टार्ट इची and it will be ended on 31st March 2020 ये ला गोटे फाइनेंशियल ईयर तो बेसिकली हमें तो गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड दियंती इकोनॉमिक्स रे बा नेशनल इनकम अकाउंटिंग रे ताको हमें कोन हिसाब करंती कि ताको गोटे फाइनेंशियल ईयर बोली हिसाब करंती इन द सेम वे जदी हमें हिसाब करबा एस्टिमेट करबा कैलकुलेट करबा कि गोटे पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर रे टोटल वैल्यू ऑफ कंजप्शन केते वैल्यू ऑफ कंजप्शन जानिबार अर्थ कोन अर्थात इकोनॉमी रे टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केते प्रोडक्शन हेची बा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन बा अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन हमें एठी जानि परिबा टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी रे केते हेची सो जेति के प्रोडक्शन हेतिबो तार मार्केट वैल्यू हमें बाहर करि परिबा अर्थात तार प्राइस बाहर करि परिबा टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इनटू द प्राइस टोटल क्वांटिटी इनटू द प्राइस
तमने यार टोटल मार्केट वैल्यू हम बाहर करि परिबा तो एई वे रे जदि हम देखिबा ताल टोटल कंजप्शन केते हिची बा टोटल प्रोडक्शन केते हिची ये मेथड रे भी हमें नेशनल इनकम को काउंट करि परिबा फॉर दैट पर्पस नाउ वी केम आउट विथ अनदर सॉल्यूशन टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम दैट इज द प्रोडक्शन मेथड या को हमें प्रोडक्शन मेथड बोली कहंती तो एठी हम केतरा मेथड पाइले टोटल फ्रॉम द अबव पार्ट ए पार्ट रे हमें पाइथिले दीटा मेथड गोटे पाइथिले इनकम मेथड एंड सेकंड मेथड हमें पाइथिले एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ये दुटा मेथड पाइथिले एंड थर्ड मेथड हम वर्तमान पाइले जाको हम प्रोडक्शन मेथड बोली कहले सो देयर आर टोटल 3 ways टू कैलकुलेट द national income method, expenditure method and production method. I hope you are clear with this graph. ये graph को बुझिले आगो सब इजीली बुझी परिबे. So the first method is income method, second method is expenditure or consumption method, the third is the product output or value added method. Now we have to understand some concepts. किछि concept हमें कोन पय बुझिबा national income accounting बुझिबा पहले हमको किछि concept बुझिबा पड़िबो कोन बुझिबा पड़िबो तो first is the gross and second is the net. Gross कोन और net कोन हमको बुझिबा पड़िबो गुटे simple example दोछि so that you can understand के what is the value of gross and net. मानि नियंतु हमें गुटे mustard oil किनुचंती mustard oil bottle गुटे किनुचंती and हमें देखुचंती केथरे लिखा है कि 1 kg तो weight is 1 kg एथरे देखिबे 1 kg exactly 1 kg रो oil नथिबो it will be less than 1 kg so गोटे kg रु कम आसीउ मानि नंतु 980 ग्राम रो oil हमको ता भीतर मिलला and what about the rest 20 gram एठी कम पय कोन पय कम हेची ना that is the weight of the container जो कंटेनर थिला जो बॉटल ले थिला से बॉटल रो weight होची 20 ग्राम ये कारण पय हमको टोटल ऑयल हमें किनथिले 1 kg एंड ता भीतर 980 ग्राम अछि 20 ग्राम नाही ताल मुझे देठी कहबी ग्रॉस वेट इज इक्वल्स टू 1 kg एंड नेट वेट जदी कहबी देन नेट वेट इज इक्वल्स टू 980 ग्राम याको कोनती ग्रॉस एंड याको कोनती नेट वर्तमान ये हला बेसिक इंग्लिश मीनिंग ग्रॉस और नेट रो कोन तापर हमें ताको इकोनॉमिक्स रे देखिबा कि यार एक्जेक्ट डेफिनेशन कोन मानि नंतो गोटे इकोनॉमी रे गोटे किछि प्रोडक्शन हेछि गोटे मोबाइल फोन रो प्रोडक्शन हेछि एंड मोबाइल फोन रो वैल्यू होछि 10000 रुपीस हमें आज 10000 रुपीस दे मोबाइल फोन किनले एंड नेक्स्ट डे 1 मंथ परे हमें जब ताको बिक्री करिया को चाहिबा देन डेफिनेटली द वैल्यू विल बी लेस देन 10000 दैट विल बी लेस देन 10000 माने नियंतु 8000 रे बिक्री हला एंड इट 2000 इज लेस 2000 इट कोन पय करतिला ना दिस 2000 इज नथिंग बट द वैल्यू फॉर यूज याकू वियर एंड टियर वैल्यू बोली कहंती in economics this is called wear and tear value by our exact economic term होची depreciation आपको हमें depreciation बोली कहबा सो depreciation हमें कोन देखले ना wear and tear value बा यूज करबा कारण जो वैल्यू रे कम होए ताको हमें depreciation बा wear and tear value कहले ताहले जदि मोबाइल फोन नो प्राइस देखिबी 10000 थिला दैट वाज द ग्रॉस प्राइस तापर 8000 हला दैट इज द नेट प्राइस ये हला ग्रॉस प्राइस एंड ये हला नेट प्राइस सो ग्रॉस प्राइस और नेट प्राइस भीतर डिफरेंस कोन एटी पाइला हमें ना ग्रॉस प्राइस ग्रॉस मान हला टोटल नेट मान हला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज इक्वल्स टू नेट आपको हमें नेट प्राइस बोली कहबा बाद यदि आपको हमें ए इक्वेशन को उल्टा टर्म रे देखिबा देन नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू gross. I hope you are clear with this concept. Now let's understand another concept, the factor cost and market price. Factor cost and market price. Factor cost कोन and market price कोन हमें पूर्वरु डिस्कशन करिथिले factor of production related concepts related to factor of production. Factor of production हमें कोन देखथिले ना there are three factors of production: land, labor and capital. Land, labor and capital तीनटा factor of production थिला हम पाखरे and the fourth factor obviously there was entrepreneur. But ए factor अनुसार हमें देखिले कि total value केते आसुची let's say कि गोटे पेन production हिची in the economy पेन रे हमें देखिले तपे land केते खर्च हिची labor केते capital केते entrepreneur केते तो total जति की खर्च हिची से सब को हिसाब करके हम ऐड कर देले कि let's say हम पाइले कि 5 rupees
यार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होची 5 टंकार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कला परे हम गोटे पेन प्रोडक्शन करि परचंती इन द इकोनॉमी एंड दैट 5 रुपीस कंसिस्ट ऑफ योर लैंड कॉस्ट लेबर कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट एंड एंटरप्रेन्योर कॉस्ट ये सब कॉस्ट को ये इंक्लूड करिछि कला परे हम पाउछंती फैक्टर ऑफ फैक्टर कॉस्ट सो फैक्टर कॉस्ट हम एटी देखले कि 5 रुपीस अछि फैक्टर कॉस्ट the rest amount ताले कोन अछि जदि 5 rupees factor cost then what about the rest amount आमे तो market price आर केता मार्केट रे केते टंगा पाउचंती ना पेन प्राइस लेट्स से कि 8 rupees अछि in the market and the factor cost is 3 rupees sorry factor cost हमर आस्तला 5 rupees now what is this 3 rupees this 3 rupees is the profit this 3 rupees is the profit बा आमे ये 3 rupees को कहि परिबा कि that is called ए प्रॉफिट भीतर तो टैक्स भी अछि इंक्लूड हेई तेनु हम तो कहि परिबा कि दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स एको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोली कहि परिबा दैट इज व्हाई इट कोन पाइला हमें ना 5 rupees plus 3 rupees is equals to 8 rupees 5 rupees is nothing but the factor cost 3 rupees is nothing but the indirect tax and 8 rupees is nothing but your market price 8 rupees को हम एटी कहले कोन ना ये होची मार्केट प्राइस तले हम कोन रिलेशनशिप पाइलेटी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस भितरे फैक्टर कॉस्ट प्लस indirect tax is equals to market price next आउ गोटे कांसेप्ट हम एठी बुझिबा फैक्टर कॉस्ट रिलेटेड कि किछि प्रोडक्ट देखिथिबे मार्केट रे जहार वैल्यू बहुत कम थाए जेमति मु एग्जांपल देबी राइस गवर्नमेंट जो राइस दोची 2 rupees पर केजी 2 rupees पर केजी रे राइस मिलुची अच्छा बर्तमान हम भाबिले जानि परबा कि इज द रियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बा फैक्टर कॉस्ट कोन राइस 1 केजी प्रोड्यूस करिया पे 2 rupees खर्च होईची द आंसर इज नो 2 टंका खर्च करी हमें 1 केजी राइस प्रोडक्शन करी नाहंती रादर 2 टंका रु डेफिनेटली अधिक खर्च होईची कोन पय अधिक खर्च होईची ना अधिक खर्च होईची हमर प्रोडक्शन करिवार 1 केजी राइस प्रोडक्शन करिवारे 2 टंका रु अधिक खर्च होईची लेट्स से कि हम मानले कि 20 rupees खर्च होईची हमर 20 rupees पर केजी ये होची फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन this is equals to हमारा फैक्टर कॉस्ट तो मार्केट प्राइस केते हला एठी ना मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू 2 rupees तले जो डिफरेंस अछि 18 rupees रो 20 rupees minus 2 rupees 18 rupees रो ये डिफरेंस कोन ना दिस डिफरेंस इज नथिंग बट कॉल्ड सब्सिडी याकू सब्सिडी कोंती ये सब्सिडी की प्रोवाइड करे ना ये सब्सिडी प्रोवाइड करबो गवर्नमेंट काहे की सब्सिडी प्रोवाइड करूची गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करियर कारण कोन ना सोशल जस्टिस पई so that accessibility affordability and availability of the food grains should be there in the market and it should be available to the unempowered section those who are not empowered or those who are not able to purchase food grains seman ko pai accessibility food grains ro affordability food grains को afford करेवा and available करेवा availability of the food grains these three concepts are related to your food security these three concepts are related to food security so food security provide kareva by giving accessibility affordability and availability of the food grains is the function of the government bartan ye function carry karibo for that purpose it needs to provide subsidy एथि पई ये कोन करछि ना सब्सिडी प्रोवाइड करछि तले हम एठी गोटे नुवा इक्वेशन पाइले कोन इक्वेशन पाइले ना फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस ये ला फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमें पाइले एठी कोन फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू मार्केट प्राइस या पूर्व जोटा हमें पढि सारथिले यदि फर्स्ट और सेकंड दिटा इक्वेशन को हमें ऐड करबा देखिबा फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस तो बर्तमान जो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आसिला याकू नेट इनडायरेक्ट टैक्स बा एनआईटी बोली कहा जाय दिस इज कॉल्ड एनआईटी जी फैक्टर कॉस्ट plus indirect tax equals to market price then factor cost plus subsidy is equals to market price तो ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमें ऐड कला परे पाइले फैक्टर कॉस्ट and indirect tax that is factor cost plus indirect tax minus subsidy is equals to market price and IT minus subsidy आपको हमें कहबा this is called net indirect tax so our final equation हबो final equation is factor cost plus net indirect tax is equals to market price factor cost plus net indirect tax equals to market price
So these are some concepts which are related to national income accounting करिया पई. So first आमे production method रे देखिबा. Production method रे calculate करिबा कि को method अछि हम पाखरे national income को estimate करिया पई. Estimating national income by production method. There are two things we need to understand in this regard. The first is GDP and the second one is NDP. GDP और NDP को हमको बुझिया पड़िबो. Let's first understand GDP. GDP. GDP means it is the final goods and services. It is the value means the monetary value. Monetary value of all final goods and services produced within boundary of a nation during a particular time period. ताले एठी हमको बुझिया पड़ियो. First keyword is final goods and services. Second is particular time period. ये दुटा terminology को बुझिले we can completely understand what exactly GDP is. Let's say final goods को हम first time बुझिबा. Final goods रो meaning कोन? There are two things. One is final goods and another one is intermediate goods. Intermediate goods. ये दुटा को बुझिबा. याको हम example हिसाब रे again बुझिबा. Let's say कि you are purchasing a car from the market. हमें car गोटे market रू गोटे car purchase करूचंती and let's say कि car रो price is 5 lakh rupees. And car रे जो wheel अछि wheel रो price होची per wheel 7,500. So for 4 wheels 7,500 into 4 30,000 is the price of the wheel. तमे तो 5 lakh rupees दउचंती एठी कार किनिया पई. We don't need to pay again 30,000 rupees because this 30,000 is included in this 5 lakh. It means the price of the wheel is included in the price of the car. Wheel ro price, car ro price रे एठी included हेकी रहिछि. So for that purpose we don't need to pay again the price for the wheels. But second case हमें देखिबा. Second case देखिबा जो जगह रे परे जदि wheel खराब हो जाउछि and हमें आ गोटे नुवा wheel किनुचंती ये जगह रे कोन करिया पड़छि ना हमको चारटा wheel पई 30,000 rupees दबा को पड़छि. तो जो जगह रे wheel पई हमें separately payment कले ताको हमें कहबा that is final goods. जो जगह रे हमें payment कलेनी माने इंटर ताको कहबा से जगह रे हमें intermediate goods. Intermediate goods. आ गोटे example दउछि so that out के clarity आसीबो आपनकर. तो let's say कि हम गोटे पेन किनुचंती पेन भीतर रिफिल अछि. So पेन पई 10 टंका हमें दैछंती and we don't need to pay again for the refill. हमको रिफिल पई आउ थरे पेमेंट करिवार आवश्यकता नै. But रिफिल सरीला परे सेकंड टाइम हमें तो रिफिल किनुचंती for that purpose we need to pay. So सरीला परे जो सेकंड टाइम रिफिल किनिले that refill is a finished goods. याको हमें final product. That is called final product. ताको हमें final product बोली कहबा. And first case जोटा हमें पेन किनिथिले रिफिल रो पैसा देइ नथिले means देइ नथिले रो मीनिंग होची पेन रो पैसा भीतर पेन रो मार्केट प्राइस भीतर सेटा इंक्लूड हेकि रहितला. So से समय हमें ताको कहबा कि that is called intermediate goods. तो ये कहू जेतरा हमें जीडीपी कैलकुलेट करंती टोटल प्रोडक्शन केते फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स को हमें केवल काउंट करंती केवल फाइनल गुड्स को हमें काउंट करंती इंटरमीडिएट गुड्स को हमें काउंट करंती नहीं. Intermediate goods को हमें काउंट करंती नहीं. Only final goods are counted in this case. The second is within the boundary of a nation and in a particular time period. Boundary of a nation means within the geographical territory of a nation. मुझे कि इंडिया रा geographical territory भीतर total amount of production in a particular financial year. Particular period माने ये period को मैं बुझी थी कि that is called a particular financial year. याको हमें financial year बोली कहउछंती कि गोटे particular financial year रे inside India, it means inside the geographical territory of India, total केते final goods and final services produce हेचंती and तार market price केते. तो एही हिसाब रे हमें जीडीपी को कैलकुलेट करंती. जीडीपी कैलकुलेट करिया पई तला हम केतरा जिंस ध्यान रखियो पड़ियो बुझेली. द फर्स्ट ये फाइनल गुड्स अछि ना नहीं देखिबे बा इंटरमीडिएट गुड्स अछि. इंटरमीडिएट गुड्स को हमें हिसाब करिवा नहीं काउंट करिवा नहीं. फाइनल गुड्स को काउंट करिवा. प्रथम कथा गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड. Goods and services both are included in this case. Second, कोठी हबो ना within the boundary of a nation, it means in the geographical boundary of a nation. मु कहली inside India. The second केबे हबो को टाइम पीरियड भीतर हबो ना in a particular financial year. So financial year रे total monetary value of the production कहार production ना final goods and services रे ताको हमें GDP बोली कहबा. I hope you are clear with this concept GDP. Next हमें देखिबा कि depreciation.
डेप्रिसिएशन ऊपर तो हम कथा हेतिले कंजप्शन ऑन द फिक्स्ड कैपिटल कि टोटल वैल्यू प्रोडक्शन है आम कहले कि गोटे फाइनेंशियल ईयर केते केबेरु केते पर्यंत आसुची ना 1 एप्रिल रु स्टार्ट होची एंड इट कंटिन्यूज अप टू द नेक्स्ट ईयर 31 मार्च पर्यंत ये कंटिन्यू होची लेट्स से कि 1 एप्रिल ले गोटे मोबाइल प्रोडक्शन होची 10000 रे तो नेक्स्ट 31 मार्च को यार प्राइस केते जाइथिबो जदी बिक्री न होइताय देन ये डेफिनेटली 8000 हे जाइथिबो कम है कि बा कंजप्शन कला परे यार अमाउंट कम हो जाइथिबो ये सब कारणरू हम एठी डेप्रिसिएशन को कंज्यूम सॉरी डेप्रिसिएशन को हमको एठी कंसीडर करिया को पडुची हम पूर्व पढितिले कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट लास्ट स्लाइड रे मु पढितिले सो वर्तमान जीडीपी माइनस कंजप्शन ऑन द फिक्स्ड कैपिटल बा जे हो हमरा डेप्रिसिएशन GDP minus depreciation it will be gross kon hejibo net hejibo so that will be net domestic product simply hame kon kariba ethi na GDP ru gross domestic product ru minus kariba kon minus kale ethi na GDP minus depreciation that is equals to NDP ba net domestic product गोटे जिंस एठी खाली ध्यान देबे G और N gross रू net हेची for that purpose we need to minus only depreciation नेक्स्ट डोमेस्टिक रू तो नेशनल हबो जीएनपी एनएनपी एटा में नेक्स्ट सेशन ने मु पढेबी ता ऊपर हमें कैलकुलेट करबा इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऊपर सो प्रोडक्शन मेथड रे हमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कैलकुलेट कले आज जीडीपी एंड एनडीपी कोन बुझिले वर्तमान हमें इफ आई विल टेक द समरी ऑफ दिस सेशन देन वी अंडरस्टूड कि व्हाट इज ग्रॉस एंड व्हाट इज नेट ग्रॉस एंड नेट एथुर हमें सब डेप्रिसिएशन को माइनस कले पाइले नेट ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट या पर आ कोन कहली ना फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू मार्केट प्राइस कहली देन फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस कहली ये दुटा इक्वेशन मिसेला पर हमको मिलला फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस अर्थात नेट इनडायरेक्ट टैक्स हला हमर इनकम टैक्स सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी ये जिनस हम बुझिले सेकंड कांसेप्ट तापर हम बुझिले डेप्रिसिएशन कोन देन वी अंडरस्टूड जीडीपी कोन जीडीपी पर जीडीपी रु डेप्रिसिएशन माइनस कले हम बुझिले एनडीपी कोन ये टोटल कांसेप्ट हम वर्तमान डिस्कशन कले अलोंग विथ द फ्लो चार्ट इनकम फ्लो चार्ट इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी सो द सेम कोर्स आई विल कंटिन्यू इकोनॉमिक्स रो नेशनल इनकम अकाउंटिंग को आज सेकंड सेशन हम डिस्कस करबा व्हिच इज एट 6 pm रे अगेन इकोनॉमिक्स रो मोर सेशन अछि you can subscribe to it so that you'll be getting the notification complete explanation description box रे दिया जाइछि इकोनॉमिक्स सोशल डेवलपमेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट टॉपिक ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक OPSC एग्जाम पाई OPSC both for preliminary and for mains exam या व्यतीत इंटरनल सिक्योरिटी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक को मो Unacademy Plus रे कंप्लीटली कवर करिछि you can subscribe to Unacademy Plus use this referral code EasyWays so that you will be getting 10% off upon your subscription amount EasyWays code use karantu so that 10% off pai paribe special classes are available which are being conducted by many educators and that is completely free of cost you can download the Unacademy app and you can access to the special classes apart from that from today itself CT B.Ed pai gote कोर्स मैराथन कोर्स लॉन्च हेची Unacademy Plus द्वारा आपण Unacademy ऐप रे ये कोर्स और डिटेल्स देखि परिबे या व्यतीत समीक्षा एंड सामर्थ्य बैच वी हैव for the OS examination OPSC civil service exam as well as for the assistant section officer exam so ओडिशा गवर्नमेंट रो प्रत्येक एग्जाम पई आपण प्रिपेयर ही परिबे Unacademy रो Unacademy ऐप को डाउनलोड करंतु सब्सक्राइब करंतु Unacademy को यूज करंतु सब्सक्रिप्शन रेफरल कोड EasyWays so that आपण 10% डिस्काउंट पाई परिबे for more details you can visit the description box so thank you everyone see you in the next class next session ने हमें नेशनल इनकम को कंटिन्यू करबा या पूर्व जो माने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड क्लास करि नांती से माने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड क्लास को देखि परिबे मु पूर्वरु या पर डिफरेंट सेशन नै सारिछि थैंक यू हैव अ गुड डे सी यू इन द नेक्स्ट सेशन